केंद्र सरकार के कर्मचारियों को करीब 23 लाख हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। सरकार अभी 14% कंट्रीब्यूशन देती थी, उसको आने वाले समय में 18.5% कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जो कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन 10% है उसको बढ़ाने की बात नहीं हुई है। यह भी तय हुआ है कि हर 3 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जाएगा और अगर कार्पस में कोई भी कमी आएगी तो उस कमी को भारत सरकार पूरा करेगी। उसका भार जो है वो हमारे कर्मचारियों के ऊपर नहीं डाला जाएगा। तो एक तरीके से ये स्कीम जो नई वाली आई है इसमें ये एक तरीके से सेल्फ फंडेड स्कीम है और इससे कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, वो जब भी रिटायर होंगे उनको 12 महीने की जो सैलरी है उसके आधार पर जो है वो 50% सैलरी का पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके साथ महंगाई राहत मिलने का काम होगा। इसमें एक अच्छाई और भी है कि जो अगर किसी पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन पर उसकी फैमिली को पेंशन का 60% हिस्सा जो है वो पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके ऊपर महंगाई राहत भी मिलने का काम। अगर किसी की पेंशनेबल सर्विस नहीं है तो उसको भी कम से कम मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये दी जाएगी और 10,000 रुपये पेंशन के साथ उनको महंगाई राहत भी मिलने का काम होगा। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। फैमिली 50% पेंशन का एश्योर्ड पेंशन का दिया जाना, नाम भी बदल गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर दिया गया है। ये भी फैसला हुआ है कि जब कर्मचारी रिटायर होगा तो उसको एक लमसम कुछ अमाउंट जो है वो उसको जरूर दिया जाए ताकि वो कुछ पैसे भी लेकर के अपने साथ अपने घर में जाए इस नई स्कीम के अंतर्गत। एक ये भी फैसला हुआ है कि जो लोग रिटायर हो गए ऑलरेडी, जिनको कम पेंशन मिली है, 3,000 रुपये पेंशन, 4,000 रुपये पेंशन, 1,200 रुपये पेंशन, 800 रुपये पेंशन, ऐसे लोगों के केसेस को भी 1 अप्रैल 2025 के बाद जब इसके नियम कानून बनकर इसको लागू हो जाएगा तो उनके भी केसेस को रिव्यू करेंगे और उनको भी यूपीएस का लाभ दिया जाएगा। तो जो रिटायर्ड साथी हैं, जो इस न्यू पेंशन स्कीम के मारे हुए लोग हैं एक तरीके से, उनको भी इसका भविष्य में लाभ मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, फिर से आप सभी का हिंदुस्तान हेडलाइंस की फ्रेश वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारी पेंशन का 18 महीने के बकाया डीए एयर के साथ 54% डीए महंगावता सरकार यहाँ पे कन्फर्म कर चुकी है। इसके तहत ही बेसिक सैलरी का आप सभी का बताना चाहूँगा, इसमें सरकार द्वारा डीए एयर का पैसा जल्द ही यहाँ पे आप सभी के खाते में जमा होने जा रहा है। इसमें सरकार द्वारा 4 साल एयर का पैसा भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे फाइनल कर दिया गया है। इसके तहत ही कर्मचारियों का इसमें 54 यानी कि 54% डीए महंगावता सरकार द्वारा यहाँ पे आप सभी को दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी यहाँ पे देख चुके हैं। सरकार द्वारा इसमें बताना चाहूँगा, इसमें जो कि हमारे गोपाल मिश्रा द्वारा इसमें कहा गया कि इसमें गोपाल मिश्रा का इसमें जो कि यहाँ पे इशारा यहाँ पे जा चुका है इसमें ओल्ड पेंशन को लेकर। ओल्ड पेंशन इसमें हमारे सभी हमारे कर्मचारी पेंशनधारकों को इसमें आगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा, बहुत ही यहाँ पे फ़ायदेमंद होने वाले हैं इसमें हमारी जो कि ओल्ड पेंशन, क्योंकि सरकार द्वारा इसमें आप सभी की इसमें सरकार की तरफ से एक बड़ी मीटिंग यहाँ पे रखी जा रही है और इसके तहत इसमें बड़ा विचार यहाँ पे सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसमें ओल्ड पेंशन को लेकर सरकार द्वारा कर्मचारियों का महंगा भत्ते के साथ साथ बेसिक सैलरी का आप सभी के इसमें 12 माह सैलरी का 50% पेंशन सरकार यहाँ पे तय कर चुकी है।
जी हाँ साथियों, ये आज की जो बड़ी खबर आई थी, इसमें सरकार की तरफ से 7 बड़े तोहफे यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय जवान। It did take considerable time, but I'm very grateful to all the chief ministers, the deputy chief ministers, the lieutenant governor, and also the finance ministers. Some finance ministers were also represented by other ministers holding different portfolios, but I'm grateful to all the states who participated and gave their views. There is a very detailed press release which is being put out. I think nearly 19 states chief ministers had participated. No, sorry, 15 chief ministers participated, 15, not 19. Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Deputy Chief Minister of 3 states, and ministers, finance ministers of the rest of them. I've listed it out in the press release, so you'll get the names. The context of the meeting was that after the second wave, we are seeing a robust growth. However, it's also a time where we are looking at ways in which we need to sustain the growth, take it as close as possible to a double-digit growth, and for which both the center and the states will have to work together. So this meeting was essentially to seek states and their ideas on how they want this to be taken further, because in most of the issues related to investment, development, and also for manufacturing and taking business activities, it is the states who are doing it from the forefront. The support from the center is always there, but we also wanted to make sure that states and their understanding of how they would want to go forward should be heard, and that is the reason this meeting was called. And therefore, I must put it up front that we've had very, very key ideas coming from states. There were also generic requests which were posed. I'm not going through each of the ideas. We've listed it out for you, bullet points of each of the suggestions which have come. Like one of the examples that I like to take is also the way in which some of the states have given approvals and for projects. They were looking for better dispute resolution mechanisms, post the award of contracts, enhancing road connectivity. Some of the northeast states came up with specific suggestions of immediate job creation for their states, and state-specific international trade policies for the Northeast. So I've listed it out. The need for a policy for offshore wind energy generation was highlighted by some states. So it is a very useful session where clearly the way in which we want to move forward is to ensure that the understanding that states have about their way of wanting to move forward post a pandemic, with the people of India showing greater aspiration to want to come out of the pandemic and clearly push towards better and speedier growth. It was just a timely meeting which we've had with the states, and the detailed notes have been taken of the oral speaking in content of the ministers, but of course we've requested each one of them to send their written note as well. One of the things which I'll make my opening intervention very brief. One of the things which states have been talking about is the way in which this year we have
front-loaded many of the dues which have to go to the states. That has been recognized, and also there was at least a few of them kept saying that the capital expenditure money that was given to them, almost like a grant, but for the 50 years which they can use interest-free and for them to return 50 years later, has been well received. Many of the states very openly said that they would want the scheme to be continued because the emphasis is on capital expenditure. Unless states and center put the money for infrastructure building, the ripple effects for promoting better and speedier growth will be not as desirable as we wish to have it. And therefore that expenditure is absolutely necessary, and many of them have been stating that. You are aware that the GST compensation which was agreed upon for this entire year has already been given even by early November. Similarly, today some of the CMs requested that for increasing the state's capital expenditure, it would really be helpful for them to get a part of the tax devolution for the current financial year also. In a sense, if it can be front-loaded, it will be helpful. There and then, of course, I have directed the Finance Secretary, who's also taking care of the expenditure, to do this immediately, so that this being a very exceptional year, states will not be short of money in their hands when all of us are pushing forward with the infrastructure expenditure to be taken up by them. So I have suggested to the Finance Secretary that in this month, to be specific, on 22nd November, normally devolution money goes on the 20th. 20th and 21st I understand is a weekend, and therefore on the 22nd, instead of the normal monthly installment of devolution amount, which is a total of 47,541 crores, I have asked Finance Secretary to release another 47,541 crore. So a total of 95,082 crores will be given to the states on November 22nd, which means other than the amount due in November of devolution, one more installment will be given together on 22nd November. So with that, the desire of the states to have some more money in their hands so that they can easily